Hello friends, welcome to this educational video blog. So in this blog I'm going to cover certain very important employees laws and acts which is established long back, and this is established for employees interest and benefits, and this is also very useful for HR human resource domain. So I would like to say this is a disclaimer. There are 29 plus laws and acts which establish for employees benefits and interest, and each act, हर एक act में, each and every act, they have lots of sections covering hundreds of pages. So I have not covered every law or act, but certain very important laws I have covered, and I have also covered overview of those laws. सभी sections cover करना is not possible in one video, so I have covered only important things and overview of certain laws. So let's start. So first act is Minimum Wages Act. So according to this act, there should be a minimum salary, at least it should be payable to employee according to their designation, experience, qualification. Means एक minimum salary designed, जो स्टेट टू स्टेट डिजाइंड हुई है, एक मिनिमम सैलरी जो इट इज सेटेड कि इतना मिनिमम सैलरी तो एक एम्प्लॉय को उसके डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, उतना तो मिलना ही चाहिए. अगर उससे ज़्यादा और जो भी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिनिमम प्लस 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 जो भी मिलती है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट वो मिनिमम सैलरी तो मिलना ही चाहिए. उससे अगर कम सैलरी मिलता है सो दैट इज़ एन एक्सप्लॉयटेशन टू एम्प्लॉय, एंड इसके अगेंस्ट एम्प्लॉय आवाज़ उठा सकता है. सो एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट तो पे होना ही चाहिए एम्प्लॉय को उनके डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग. एंड this is for Minimum Wages Act, and this act is covered under the Code of Wages 2019. So basically there are 4 codes for employees laws and acts: the Code on Wages Act, the Code on Social Security Act, then Code on Industrial Relation Act, then Code on Occupational Safety, Occupational Safety, Health and Working Conditions Act. सो इन कोड्स के अंदर कुछ सर्टेन लॉज को ग्रुप कर दिया गया है, एंड दीज कोड्स वेर एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1st 2022. I believe, I mean I have learned from certain book. So these codes, ये जो 4 कोड्स है, इन 4 कोड्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ एक्ट्स को कवर कर दिया गया है, एंड we'll see those acts, some important acts one by one. So this is about Minimum Wages Act, which is covered in the Code on Wages 2019. Now next act is Employee State Insurance Act. So this employee state means the well-being of an employee. State अपने आप में एक टर्म है जो बताता है कि क्या चीज़ कवर कर रहा है. ये एम्प्लॉय की स्टेट या वेलबींग कवर कर रहा है, मीन्स उनको मेडिकल एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, उनकी फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है. इफ़ सपोज एम्प्लॉय हैड एन एक्सीडेंट तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में से कुछ परसेंट एम्प्लॉय का डिडक्ट होगा मंथली बेसिस पे, एंड कुछ परसेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा मंथली बेसिस पे. सो दिस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स 0.75% ऑफ ESIC wages. Means ESIC wages is the calculation parameter to calculate ESIC. We will discuss in some other video. I'll make a separate video for this. So employee contribute करेगा 0.75% and employer कंट्रीब्यूट करेगा 3.25% ग्रॉस सैलरी में, एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में. सो ये जो डिडक्शन होगा एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन होगा. सपोज अगर एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000, सो 75 रुपीज़ डिडक्ट होगा एम्प्लॉय की सैलरी से, और 325 डिडक्ट होगा जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा सेपरेटली. मीन्स अगर 10,000 है तो उसमें 75 तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट 10,000 प्लस 325, जो 325 है वो एम्प्लॉयर एडिशनली contribute करेगा for ESIC, I mean for this ESIC account of an employee. So this is very 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 important act. Now Provident Fund Act. This Provident Fund Act, Provident Fund Act is a very old and the basic and most important act, because ये
एम्प्लॉय की सेविंग्स का टेक केयर करता है, एम्प्लॉय की सेविंग्स को गवर्न करता है। एक एम्प्लॉय अपने 30 से 40 साल के करियर में मंथली कितना सेव करता है, उस सेविंग को गवर्न करता है ये एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, आफ्टर मीन्स सर्टेन अमाउंट ग्रॉस सैलरी में से सर्टेन अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है, एंड सर्टेन एडिशनल टू दैट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, विच इज़ 12%। ओके, 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एंड दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। सो दिस एक्ट इट टेक केयर्स ऑफ द सेविंग्स ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिटायरमेंट, गवर्न्स प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन। सो आफ्टर मीन्स जब एम्प्लॉय अपना पूरा जॉब लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो ये पूरा प्रोविडेंट फंड एक्ट उसको डिसबर्स होता है, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉय कि वो उसको किसी इमरजेंसी में अगर उसको पैसा चाहिए तो वही प्रोविडेंट फंड के अकाउंट से वो पैसा निकाल सकता है। इसके लिए एम्प्लॉय को 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अपनी सैलरी से, ग्रॉस सैलरी से। ऑल्सो एम्प्लॉयर एडिशनली 12% प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, विच इज 12% फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड टू। सो I will discuss separately about the Provident Fund Act with an example in different video. Let's move on to this act, Payment of Wages Act. So this, according to Payment of Wages Act, this says that the salary, this act takes care of the salary disbursement to employees. For example, अगर there's a salary cycle of each and every employee, right, कि 30 days में salary disburse हो जानी चाहिए employee को, लेकिन there are certain companies which disburse salary so late, like after 10th of month, after 15th of month. So this is against this act. Okay, so this, according to this act takes care of the salary disbursement to employees on time. Salary should be paid at least first of every month. Salary should be paid, or at most it should be paid to 7th of every month. Otherwise it is offensive. So this act takes care of the salary disbursement on time, and unnecessary deduction का भी take care करता है. What are unnecessary deduction? We will discuss in next video. So this is very 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 important act, and इस act की awareness हर एक employee को होनी चाहिए. Now the fifth act is Equal Remuneration Act 1976. So according to this act, this is very simple act, that equality among employees irrespective of caste, creed, gender. So no differentiation and discrimination according to gender or position is to be done to employees. Salary is decided on the basis of qualification and skill. There is no discrimination on basis of color, caste and creed. Okay, so this is to provide equality to employees, and this act, Equal Remuneration Act, comes under the Code on Wages. So I have told there are four codes which have been established in 2022 July, and इन codes के अंदर certain acts को group कर दिया गया है. So those codes are, first is the Code on Wages 2019, then second is the Code on Social Security Act 2020, third is Code on Industrial Relation Act 2020, and the fourth is Occupational Safety, Health and Working Condition Act 2020. So in four codes के अंदर ये certain laws को, acts को cover कर दिया गया है. So these are the laws, few laws जो मैंने यहाँ पर discuss किया है. मैं each and every law को in different videos में separately discuss करूँगी. I have given the overview of these laws, and next video I am going to continue with these laws, some more important laws. So thank you for watching this video. Bye bye.